STO फॉर इंडिया ये है कि रशिया हमारा फ्रेंड है, तो रशिया वहां पर अगर स्टेबिलिटी करेगा तो हमारा काम ही करेगा। अच्छा, तुम लोगों ने होमवर्क भी किया, वेरी गुड। अशकाबाद एग्रीमेंट, हाँ, INSTC को मटीरियलाइज करेगा, लेकिन सेम तो नहीं है, बिकॉज इन अशकाबाद एग्रीमेंट ओमान एंड अदर कंट्रीज आर देयर विच आर नॉट इन INSTC। ठीक है मैम, और कुछ मैम, मैम, डायरेक्शन भी बताया करो। लेफ्ट राइट सेंटर कहाँ पे? हाँ मैम, you have made us right in the last class that the ray of hope for India is resurgence of Russia. But actually, I have watched a video in which some expert commentators were saying. I can't see you. हाँ, Yeah. now Ma'am, tell me. Ma'am, you have made us right in the last class that the ray of hope for India is resurgence of Russia. Yes. Actually, I have watched a video in which some expert commentators were saying that the recent rise of Russia, it is not like that of Cold War era where Russia was the dominant player. Right now, Russia is playing second fiddle to China. It is like a junior ally of China. So, तो ठीक है ना, तो उससे क्या फर्क? and they concluded that therefore the rise of Russia from 2015 onwards, it's not a news for India's benefit. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन थे एक्सपर्ट, किस चैनल पे आप? मैम, फरीद जकारिया। कौन? फरीद जकारिया। फरीद जकारिया। या वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हैं, वो US के हैं, उनकी बात नहीं माननी है। मैम, आप ही वीडियो से तुम्हारे हिसाब से वो ज्यादा IR जानते हैं कि हम? आज इसका फैसला होगा। वो कौन है? वो मीडिया पर्सनैलिटी हैं, तो तुम्हें सही बात थोड़ी बताएंगे। यस और हम हैं एक शिक्षक। यस मैम। हमारा कोई उद्देश्य थोड़ी है पढ़ाने का, ठीक है, राजनीतिक उद्देश्य नहीं। चलिए, हाँ, इनका तुम लोग 2 माइक क्यों नहीं रखते हो? देखो, जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजी, ठीक है। सबसे पहली बात, एक जो सिंगल वर्ड होता है उसके कई मीनिंग्स होते हैं, ओके। तो मीनिंग्स जो हैं वो कॉन्टेक्स्ट को देख के बताए जाते हैं, ओके। तो एक कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया, जियो पॉलिटिक्स के ही 1000 कंसेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट हमने बताया, जियो पॉलिटिक्स का मतलब हुआ एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, और उसका ऑल्टरनेटिव टर्म मैंने बताया जियो इकोनॉमिक्स। तो दोनों ऐसा नहीं होगा कि एक ही होगा हमेशा, लेकिन कब कौन डोमिनेंट है। अब फिर मैंने बताया कि जब किसी कंट्री की आप स्टडी करते हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए उसका जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्यों है। तो जब हम जियो स्ट्रेटेजिक डिस्कस करते हैं तो वहां से इमर्ज होने वाले सिक्योरिटी कंसर्न्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। वो ट्रेडिशनल भी हो सकता है एक स्टेट का दूसरे से, दूसरा नॉन ट्रेडिशनल भी हो सकता है, उसमें क्लाइमेट चेंज भी आ सकता है, उसमें टेररिज्म भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हेल्थ भी आ सकता है, ओके। एक है जियो पॉलिटिक्स, जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं तो जियो पॉलिटिक्स का एक मीनिंग होता है बैलेंस ऑफ पावर। जियो पॉलिटिक्स एक फॉरेन पॉलिसी भी है, जियो पॉलिटिक्स एक सिस्टम भी है। तो जियो पॉलिटिक्स की फॉरेन पॉलिसी सबसे पहले किसने दी? कौटिल्या ने। और कौटिल्या ने दिया बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट।
तो जब हम डिस्कस करते हैं जियो पॉलिटिक्स, तो हम डिस्कस करते हैं बैलेंस ऑफ पावर। जैसे श्याम सरन की या किसकी बुक है अभी, एशियन जियो पॉलिटिक्स, तो उसमें उन्होंने क्या डिस्कस किया, यूएस फॉरेन पॉलिसी वर्सेस चाइनाज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम उसको आएगी जो एक वर्ड का एक मीनिंग को पकड़ के बैठेगा, और लैंग्वेज ही तो समझना है और कॉन्टेक्स्ट में समझना है। फाइन, तो वी आर स्टडीइंग अबाउट वेस्ट एशियन क्राइसिस, एंड द मदर ऑफ all crisis is called as Israel-Palestinian issue. And I believe that you all are very clear about the conflict. आपको सबको पता है कॉन्फ्लिक्ट का इवोल्यूशन क्या है। Whenever we talk about Israel-Palestinian issue, there are certain terms come. For example, two-state formula, Oslo process, Camp David Accords, Golan Heights, Gaza. Do you know all the terms? मैक्सिमम लोगों को पता है कि नहीं? तुम लोग जब पेपर पढ़ते हो तो ऐसे कुछ लगता है कि कैसे लिंक करें। अब अपने सिलेबस में तो क्या है, अपने सिलेबस में है इंडियाज वेस्ट एशिया पॉलिसी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड what are the developments that have happened in West Asia, and from what time to what time what has been India's position. अब वेस्ट एशिया में कोई एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं, उल्टा कौन सी नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन। तो वेस्ट एशिया में इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट है, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, अरब्स वर्सेस ईरानियन कॉन्फ्लिक्ट है, देयर आर सिविल सोसाइटी और यू कैन से सिविल वॉर्स हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। वंस these conflicts used to be less related to each other, but because of globalization, what is happening, world is coming closer, everything is getting connected with everything else, and earlier issue was little bit simpler if you talk in present time, because number of actors were less, but now number of actors has increased. Again, stakes, if we talk from perspective of India, our stakes were less, but now as our profile is rising, our interests are increasing, so stakes are also increasing. अब वेस्ट एशिया में इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फ्रॉम आर्मीनिया टू येमेन, क्वेश्चंस में भी कुछ भी आता है, मतलब ऐसे नहीं है कि दे विल जस्ट आस्क इंडिया यूएई रिलेशंस बताएं, वो तो आप जीएस में भी नहीं पूछेंगे। तो आपका पर्पस क्या है कि यू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, जो भी कैसे पॉलिटिक्स इवॉल्व हो रहा है, व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इजराइल पैलेस्टीनियन वॉर या हमस इजराइल वॉर, right now entering into where it is entering into a wider conflict which can lead to a formal type. Everybody is silently talking about we are living in third world war, but
मे बी इट कैन लीड टू वर्ल्ड वॉर। कब होता है? जब डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व होती चले जाती हैं। तो अब तक व्हाट यू सी लाइक चाइना हैज बीन नॉट वेरी वोकल ऑन वर्ल्ड अफेयर्स। चाइना वॉज फॉर इट्स ओन पीसफुल राइज, ज्यादा इधर उधर बोलता नहीं था। लेकिन नाउ चाइना इज ऑल्सो हैज वार्नड इजराइल दैट Israel's action in Rafah area that can lead to huge humanitarian crisis. Israel should not be doing that. There is a possibility of change in the equations between Israel and Egypt, और पार्टीज बढ़ती चले जाएंगी कॉन्फ्लिक्ट में। तो फिलहाल अगर हम एक टाइम लाइन से समझेंगे सो दैट वी विल अंडरस्टैंड कि कब क्या हो रहा है और हाउ थिंग्स हैव इवॉल्व्ड। ओके, नाउ डू यू नो लाइक अप टिल नाउ व्हाई what are the sticking points in solution of the Israeli-Palestinian issue? The sticking points. Fine. So, and where is this peace process? So why it matters to India? Because West Asia is in our extended neighborhood, and because of globalization, world is becoming closer, and the Arabian Sea does not divide, it unites, in the sense their problem becomes our problem because it is one security architecture. So now we will understand the various stages in the evolution of conflict so that we understand what is the role of different players. ये अब कहाँ कैसे चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले हमको समझना है कि फ्रॉम वेयर ऑल दिस इशू इन स्टार्ट। कुछ चीज़ें शुरुआत में आएंगी, रोल ऑफ टर्की, फिर हो सकता है टर्की का रोल प्रेजेंट टाइम में आ जाए। ठीक है, तो हमको ये सब चीज़ें समझनी। तो लेट अस अंडरस्टैंड Israel-Palestinian conflict in a timeline manner. Israel-Palestinian issue. ठीक है, और एक जो इसमें ये तो एक ब्रॉडर इशू होता है। ब्रॉडर इशू में एक ये तो केस स्टडी है। तो ब्रॉडर इशू क्या है? ब्रॉडर इशू हो गया यूएस हेजेमनी, यूएस trying to establish control on the regions which are resource rich region, core regions from the perspective of world trade, as well as which are on the major trading routes. And again, earlier it was different countries were competing. जो first level of competition है, that was among Russian Empire, Turkish Empire, Austro-Hungarian Empire. अभी क्या है? अमेरिकन, चाइनीज, रशियंस, इरानियंस, टर्किश, एवरीथिंग इज नाउ चेंजिंग। तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है? हिस्ट्री। जैसे इजराइल पैलेस्टीन, इट वाज इनिशियली पार्ट ऑफ द ओटोमान एम्पायर, एंड देन ओटोमान एम्पायर का ये बन गया British. Ottoman Empire was defeated in the First World War, and then it became a British mandate. It was controlled by the British,
And then in 1948, Israel declared its independence from the British mandate. British has left. Now in this conflict, certain terms will come like intifada, terms like Nakba, terms like Holocaust. For example, Brazil's president said Israel's action is like repeating Holocaust. So Benjamin Netanyahu, he was very much upset with how can you compare this action with Holocaust. Fine. So we have to understand because अभी ब्राजील के जो ब्राजील and South Africa, they are spearheading more anti-Israel criticisms because they are more pro-China countries. Fine. तो अब हमको समझना है इसका इवोल्यूशन. तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से स्टार्ट. स्टार्ट से स्टार्ट का मतलब है स्टार्ट से स्टार्ट का मतलब है स्टार्ट. ठीक है. तो स्टार्ट से स्टार्ट हम जाते हैं मेडिवल टाइम्स में. चलिए, क्योंकि मेडिवल टाइम्स इज कमिंग बैक. ओके. मेडिवल टाइम्स में फर्स्ट लिखो राइज ऑफ टर्की, सॉरी राइज ऑफ ओटोमान एम्पायर. ठीक है. नाउ when Ottoman Empire, this is around 16th century, right in bracket, 16th century. And the time when Ottoman Empire started expanding, that was the time when Byzantine Empire, yesterday I talked about it, Byzantine Empire started declining. Okay, it was weak. So Ottomans were able to capture the region which was under the Byzantine Empire. And Byzantine Empire was primarily in Southern Europe and Eastern Europe. So in Southern Europe comes the countries like Bulgaria, countries like Greece. So the spread of Ottoman Empire was in Europe. Europe का जो you can say Greece तक Ottoman Empire, and in southern regions of Europe. Southern regions of Europe means Balkan regions. Balkan regions, for example, as I said, Bulgaria. Then the states which were earlier in Yugoslavia. So now they are divided and so many states have come into existence like Serbia, then Southern Macedonia, then the most significant of all this is Bosnia Herzegovina. And when the Cold War ended, immediately after the end of Cold War, the internal wars started in Yugoslavia, and those were between the Christians and the Muslims. And Bosnia is primarily dominated by the Muslims, and other regions dominated by Christians, and there is a mix of the population. And because of these wars, Samuel P. Huntington has coined the term clash of civilizations, means ideology has ended and the age of religion
has restarted. So this southern Balkan region, this was also earlier under the Byzantine Empire. And then because of Ottoman Empire, there was Muslim population also that, and still there is so much of conflictual scenario in these regions. And the First World War started when a Serbian insurgent or militant fired the Prince of Austria. And who was behind all these things? Obviously, the Western countries. Because Western countries wanted this region to be free and they wanted to reclaim their land. Fine. So, in a way, you can say Muslims versus Christians. And the war in Middle East is linked to the wars in Europe. So earlier, Christians were defeated by Muslims. And the Christians or the Byzantine Empire, they had to exit. And this region came under the influence of Ottoman Empire. तो ये यहाँ से हो गए एग्जिट. तो अब ये जब से यहाँ से एग्जिट हो गए, तब से it is a matter of prestige for the Christians to reclaim this land. इनको reclaim करना है, ठीक है? Because again they have a sense of racial superiority. उनकी तो पूरी theory of imperialism, colonialism इसी पर based है. तो imperialism, colonialism को how do they justify? They justify that the people from the West, they are destined to rule because they are the superior civilization. Or if they will not take this region back, this theory becomes a flop theory. If someone from Asia, Central Asia, becomes so powerful that they throw the Christians, means Europeans at that point of time, out. तो इनका तो उस दिन से सोच था कि किसको खत्म करना है, तो खत्म करना है पहले ओटोमान एम्पायर को, और इनको ऐसे नहीं खत्म करना है, जड़ से खत्म करना है. फाइन. तो ये जो ओटोमान एम्पायर है, एक तो ये सदर्न यूरोप में है, इसके अलावा ओटोमान एम्पायर is also in Central Asia region till China, but right now we are talking about Eastern Mediterranean, where lies Israel and Palestine, or Jerusalem as such is a place which is the holy place of Christians also. Jews का तो कोई खास रोल ही नहीं है एक्चुअली पूरी पॉलिटिक्स में. They have been used. Fine. तो ये बहुत मैटर ऑफ शेम है फॉर द यूरोपियंस कि कॉन्स्टेंटिनोपल से इनको भगा दिया गया. ठीक है.
तो अब ये उसी दिन से खुंदक खा के बैठे हैं, यहां से तो इनको निकालना है, ठीक है। तो अब कैसे निकालना है? यू हैव टू मेक Ottoman Empire weak. Fine. So, how to make Ottoman Empire weak? So, if you see location, it is like Turkey, and then it's a Black Sea, and here is Russian Empire, and then it is southern region. So Russian and और बाल्कन्स में इधर ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है। फाइन। तो रशियंस आर ऑल्सो आफ्टर बाइजेंटाइन एम्पायर lost its space in the southern Europe. They got more asylum, shelter, etc. in the Eastern Europe. So now Russia consider itself as the guardian of the Orthodox Church. Plus Russia and Turkey, they share the maritime, or you can say Black Sea, and Russian Empire was also an expansionist empire. So Russian Empire and Turkish Empire, they entered into the frequent wars, and one prominent war was the Crimean War. And in Crimean War, टर्की, तो जो पॉलिसी यूएस की है, पहले ब्रिटिश पॉलिसी थी। ब्रिटिश पॉलिसी क्या है? डिवाइड एंड रूल, एंड द वीकर पार्टी को सपोर्ट करो, बेट एंड ब्लीड करो, जिससे कि ये भिड़ जाए, ठीक है। सो इन क्रीमियन वॉर द वेस्टर्न पावर्स सपोर्टेड टर्की, and as a result Russians have suffered a heavy loss. Now Turkey will start thinking what a nice people they are. Fine. तो सबसे पहले जिसको तोड़ना है या मारना है, सबसे पहले उसका विश्वास जीतना होता है, जिससे कि वो खुद ही मर जाए प्यार से, ठीक है। तो टर्की वाले इस मतलब लीडर्स ऑफ टर्की अर्लियर, लीडर्स ऑफ टर्की लेटर, द लेटर लीडर्स वेयर नॉट एज स्मार्ट, सेम विद द मुगल एम्पायर, सेम विद द कांग्रेस पार्टी और व्हाटएवर। लीडर्स अगर स्मार्ट नहीं है, और वैसे भी चेंज इज द लॉ, यू विल डिक्लाइन, ओके। So Turkey and Russia, up Russia will also not accept, Russians also consider themselves as a great civilization, so these wars will not end. And when the continuous wars keep on happening, then both the parties become weak. And when the parties become weak, that is the time that you start the war. So these things started, continued till First World War. Okay. Now by this time, Europe started becoming stronger, because the people from Constantinople, they first shifted to Italy. In Italy, Renaissance started. After Renaissance, Industrial Revolution started. So Europe got the primacy in warfare technology. They were superior, मतलब Industrial Revolution हो गया, warfare technology है, better equipments हैं, better ships हैं, better roads हैं. So obviously Turkey was in a weaker position.
अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में व्हाट यूरोपियंस वे आर डूइंग इन द बाल्कन्स पहले पहले तो यहाँ पे क्रिश्चियंस थे, नाउ मुस्लिम्स, ठीक है। तो दे विल स्टार्ट प्रमोटिंग द पीपल इन बाल्कन्स, सर्बियंस, विच आर मोर क्रिश्चियंस देन, हालांकि मिक्स्ड है, फाइन, एंड दे स्टार्टेड द वॉर, और फ्रॉम वेयर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। तो अब टर्की को क्या लग रहा है कि दे आर अगेंस्ट टर्की, सो टर्की विल ज्वाइन द वॉर with Austria and Hungary, fine, and this combination, Germany, Austria, Hungary and Turkey, this combination will lose the war, fine, and then will come the Treaty of Severus, and Treaty of Severus was a big embarrassment for the Turkey. तो सेवरस ट्रीटी के बाद टर्की के पास जो भी द सुल्तान ऑफ टर्की, उनको they made them prisoner, they were defeated, they compelled them to sign the Treaty of Severus, by which the Black Sea became a place where it becomes a sort of a international border, and certain restrictions come on Turkey, means they cannot charge money for any ship which passes through the Dardanelles and Bosphorus Strait. Turkey charge nahi kar sakta hai. Turkey cannot drill the oil, they cannot sell the oil also. And then what Britishers did, टर्की के जो सुल्तान थे उनको शिप पे बैठाया और शिप से कहा ले जाओ इनको वापस, ठीक है। तो दैट वाज द पॉइंट व्हेन दे कुड टेक द रिवेंज एंड दे कुड गेट द थिंग्स बैक, फाइन। Plus Turkey's territories in this particular region were divided. So Turkey's territories were divided, and southern part, and for this itself, to promote the insurgency in Balkans, came Woodrow Wilson's and Americans' plans of national self-determination. So they wanted to dismember Turkey, national self-determination in Central Asia also, in other regions also. So Turkey's territories have to be redistributed. That is why there are certain islands here. Cyprus is one of them, which Turkey claims and which Greeks also claims. Then other islands, so कुछ region Greeks को मिल गया, कुछ Italians को मिल गया, Balkans अलग हो गया, और टर्की के जो मिडिल ईस्टर्न टेरिटरीज थे was divided between फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो ब्रिटेन को ज्यादा बढ़िया लोकेशन या मिल गया in terms of the Palestinian land, and French got Syria, French got Iraq and all these regions, and they became the mandate. Now Turkey, Americans will never leave Turkey. टर्की को पनिश करके टर्की को वीक करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन टर्की को लूज करना अच्छी बात नहीं, बिकॉज टर्की विल बी इंपॉर्टेंट कंट्री, फाइन।
and Turkey in American geopolitics will be an important country to control Russia's expansion. So Turkey has to be brought back in the system. तो अब जब सुल्तान खलीफाट ये सब खत्म हो रहा था, so that time there was a national movement in Turkey led by Kemal Pasha ya Ataturk Kemal Pasha, and he said that we will not agree to whatever distribution of our territories you have done. And Americans, by this time, Americans started entering into world politics and they needed Turkey. So they thought that we will accept some of his demands. So some of the territories were given back, some concessions were given with respect to Black Sea and other things, so that टर्की वाले फिर इमोशनल हो जाएं. ठीक है. और अमेरिका क्या सोच रहा था कि इनको तो अपने साथ रखना ही रखना है. So another treaty comes, Treaty of Lausanne, and then the modern Turkey was not there earlier. It was an Ottoman Empire. So by that treaty, Turkey as a state got recognition, and Kemal Pasha has ended caliphate and ended monarchy also, because he was also from military, and Turkey, like he thought that Turkey's development etc. is more possible when they are more closely integrated to Europe. And it is believed that when that geological developments, evolution was happening, so Turkish peninsula was a part of Europe only. So in order to get greater integration with Europe, he started the secular policies. So Turkey became a secular state. Turkey as a state where military having the strong control. And then came Second World War, and Turkey was not so much interested in intervening in the Second World War, but they created a condition where Turkey had to intervene. There is very famous Battle of Gallipoli, which is a peninsula near Istanbul only. So Turkey got involved very late, and this time Turkey joined the war through from the side of the Allied powers. And after that, you know that US started the Cold War, and US wanted Turkey to be their side. So Turkey has been integrated in NATO, and Turkey has the second largest force, the second largest manpower contributor in NATO after US is Turkey only. Fine. So this is how USA converted a rival into an ally, and that is called diplomacy. Diplomacy is converting your enemy into neutral, a neutral country into your friend, and a friend into ally. But if you make your enemy worse, bigger enemy, that is a failure of a diplomacy. So begins Turkey and US close relationship. And because Turkey has been close to US, and Turkey will close to US will never be liked by the Muslim world,
because they will associate US with Israel. So Turkey has to talk about the rights of Muslims. तो शुरुआत में टर्की को पैलेस्टीनियंस नहीं दिखते थे, शुरुआत में टर्की को मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी लेजिटिमेसी के लिए दिखते थे कश्मीरीज, दूसरे दिखते थे इघूर मुस्लिम्स, जिनको जिनको यूएस कहता था कि इनके लिए आप काम करें, उनके लिए करते थे. तो इसीलिए टर्की ऑलवेज हैड क्लोजनेस विथ पाकिस्तान. So because Turkey has been close with Pakistan and Turkey both were the members of USA's collective security arrangements. टर्की तो नेटो में भी है, टर्की मिडिल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में भी है. तो टर्की और पाकिस्तान तो एलाइज जैसे कंट्रीज हैं. And because of that, our relations with Turkey was not good. Again, because Turkey has been a member of NATO, Turkey and Russia tensions, then our relations with Russia. So, never ever India-Turkey relations were very good. Fine. So, the relations remained cold. इसीलिए कहा जाता है टर्की हैज बीन कोल्ड. टर्की इज अ फीस्ट इन वेस्ट, लेकिन फॉर इंडिया इट हैज ऑलवेज बीन कोल्ड एंड टेस्टलेस. सो वी हैड दैट कॉन्ट्रडिक्टरी टाइप ऑफ रिलेशंस. एंड व्हाट हैज बीन यूएस पॉलिसी? यूएस ऑलवेज टॉक्ड अबाउट नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, बट यूएस ऑलवेज सपोर्टेड the military regimes or dictators in the West Asian region. तो वेस्ट एशिया के लिए यूएस की थ्योरी भी है अरब एक्सेप्शनलिज्म. अरब एक्सेप्शनलिज्म में यूएस कहता है कि डेमोक्रेसी कैन कम एनीवेयर बट डेमोक्रेसी कैन नॉट कम इन द अरब वर्ल्ड. अरब वर्ल्ड में डिक्टेटर ही सही है. तो US came to bring the three major countries, one Turkey, another Pakistan. Initially, Pakistan also had lot of respect in the Muslim world because Pakistan was seen as a leader in the Muslim world, which can brought a very new and a very modernized way of life. And another became Egypt. And in all the three places, USA established a form of government where the military has the dominant role. And this relationship continued. Now, because Turkey was in NATO and Turkey was very hopeful of being member of EU, Turkey has been silent on the Palestinian issue. And that is why, despite the fact it was originally Turkish, it was originally under Ottoman Empire. So initially when you see the wars, so Middle East has witnessed the proxy wars of the Cold War. And Middle East was divided between the pro-Soviet countries and the pro-US countries. So the countries like Syria, countries like Syria, Iraq, they have been Lebanon, Lebanon तो खैर middle path था, लेकिन Syria, Egypt and Iraq, they have been very pro-Russian countries. And pro-US countries, primarily at that point of time because of creation of Israel, US was very late in bringing Egypt etc. under it, but US के उस समय partners थे ईरान.
Iran, Turkey and Pakistan as far as this West Asia is concerned. So जो फर्स्ट वॉर है, तो जब इजराइल इज बीइंग क्रिएटेड, वॉर क्यों है? बिकॉज एक तो टर्की को पोजीशन किया अगेंस्ट रशिया, दूसरा पोजीशनिंग खुद यूएस ने फिजिकल पोजेशन कर लिया इन द फॉर्म ऑफ इजराइल। तो ब्लैक सी से अगर रशिया को वर्ल्ड को एक्सेस करना है, रशिया हैज टू गो टू ईस्ट मेडिटेरेनियन, and East Mediterranean has American outpost. So it was less of a Arab-Jewish conflict. It was more a consequence of Russian and American superpower rivalry. तो बन गया अपना पैलेस्टीन। तो इतना लिखा जाए है कि नहीं लिखा जाए? कि याद रहेगा? ठीक है, ये कहानी लिखते हैं। तो कहानी थोड़ा टाइम लाइन में लिखो, स्टोरी तो आपको समझ में आती है। यस, समझा दो, उसका कॉन्टेक्स्ट समझा दो। कौन सा कॉन्टेक्स्ट समझा दें? कॉन्टेक्स्ट ये है कि सबको एक्सपेंशन करना होता है, लेकिन एक्सपेंशन फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंशन कर सकते हो, एक्सपेंशन का जस्टिफिकेशन देना होता है। क्योंकि घर के ही सैनिक पूछेंगे कि हम मरने क्यों जाएं, तो आपको कहना होगा तुम्हारा रिलीजन खतरे में है, तुम्हारा नेशन खतरे में है। तो ये स्टोरी बनाई जाती है कि ओटोमान के कारण खतरा है। तो स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं, टाइमलाइन से काम हो जाएगा ना। चलो टाइमलाइन लिखते हैं। मैम, तो मैम सदर्न यूरोप में मोस्टली प्रीडोमिनेंटली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे। सदर्न और ईस्टर्न में ऑर्थोडॉक्स जो हैं वो रशियंस को बोला जाता है, और इनको ईस्टर्न चर्च बोला जाता है। ये बाइजेंटाइन एम्पायर वाले थे, जैसे इटली में बाद में गए रेनेसा के कॉन्टेक्स्ट में। और मैम इजिप्ट, आपने कहा था इजिप्ट, टर्की, पाकिस्तान, यूएस एस्टैब्लिश्ड मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हियर, बट मैम ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इजिप्ट साइडेड विद रशिया, सो हाउ वाज इट पॉसिबल कि इजिप्ट में मिलिट्री गवर्नमेंट यूएसए ने करी? लेकिन बताया तुम्हें? आपने तो बताया था अभी। हमने बताया, ठीक है। तो कोल्ड वॉर एक ही दिन में थोड़ी खत्म हो गई। अब चलो, अब पहले इतना समझना है, टाइमलाइन लिखो। नहीं ऐड ना करो, वही काफी। क्यों ऐड करना है? ड्यूरिंग द मिडिवल टाइम, एज यू मेंशन्ड, कि आप बताए कि वहाँ पे आइडियोलॉजी खत्म हो रहा है और मतलब रिलीजन को फोकस करके वहाँ पे। मेडिवल टाइम में नहीं, मॉडर्न टाइम में। हाँ, मिडिवल टाइम्स में तो मैम बोले थे। मेडिवल टाइम में तो आइडियोलॉजी थी नहीं, रिलीजन ही था। हाँ, तो मतलब मैम आपने वही बताया था स्टार्टिंग में। मैं मतलब मेरा ये क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार, उससे उसके कुछ पीछे और आगे दोनों, वहाँ पे मतलब रिलीजन ही था या फिर आइडियोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द वॉर? ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यस, रिलीजन यूज किया गया ना। आइडियोलॉजी कब का? आइडियोलॉजी नहीं है अभी। आइडियोलॉजिकल वार हुआ ही नहीं है मतलब इसमें। आइडियोलॉजी का टाइम बहुत कम है। आइडियोलॉजिकल वॉर है कोल्ड वॉर, बहुत शॉर्ट पीरियड है। हमेशा जो वॉर रहे हैं वो कौन से रहे? कल्चरल, सिविलाइजेशनल। ऐसे थोड़ी समझोगे। चलो अब लिखना चालू करो, वैसे समझाने के बाद भी नहीं आता है समझ। अब सबसे पहले लिखो पॉइंट नंबर 1, लिखो ओटोमान एम्पायर। ओटोमान एम्पायर occupied the regions of Eastern and Southern Europe
which was earlier under Byzantine Empire. अब लिखो राइट, Turks occupied Constantinople and pushed Christians out. अंडरलाइन करो, Christians out. अब लिखो, some of them moved towards the Eastern Europe and Russia, resulting into emergence of Orthodox Church in Russia. तो ऑर्थोडॉक्स चर्च भी है, बाइजेंटाइन है, तो उनके डॉक्ट्रिन्स काफी मिलते जुलते हैं, हमको उसमें जाना नहीं, ठीक है? हाँ वही क्रूसेड्स ही है ये सब, ठीक है? आप नेक्स्ट लिखो राइट, सम ऑफ देम रीच्ड टू इटली. And they took Greek classics as a heritage of Western civilization. To protect from Islamists. ठीक है, अब लिखो राइट, दिस लेड टू Renaissance in Europe, which was instrumental in emergence of Europe based on industrial revolution and superior weapons. ठीक है, now next paragraph लिखो राइट, Western world always wanted to reclaim the lands which were snatched by Ottomans. Right? Hence, they always wanted to make Ottomans weak. देखो, gradually the relative power of Turkey kept on declining
राइट, डिक्लाइनिंग अंडरलाइन करो, रीजंस। पॉइंट नंबर 1, टर्की मिस्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, and therefore was inferior in war technology. Second point, Turkey was engaged in the constant wars with neighboring empires, primarily Russian Empire. Next, right, Turkey's leadership also declined in terms of quality. तो जैसे थियोरीज हैं, आप पावर में आते हैं तो कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, ठीक है, और सब टाइम टाइम की बात है, कभी ये पावर में कभी वो पावर में, तो वो कॉम्प्लेसेंट हो गए. अब नेक्स्ट लिखो, एज टर्की बिकेम, as Ottoman Empire became too large, it overstretched itself. ठीक है, it started facing internal rebellions. अंडरलाइन करो, इंटरनल rebellions. लिखो, बाल्कन रीजन became hot spot. Hot spot अंडरलाइन करो, why? Because of the presence of Muslims and Christians with historical animosity. देखो, Americans started theories like national self-determination. Right, there was insurgency in Balkans to free the region from Ottomans. Right. In fact, First World War started when a Serbian insurgent attacked the Prince of Austria-Hungary.
अब एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट हैज बीन द पॉलिसी ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज सैमुअल पी हंटिंगटन की भाषा में क्रिश्चियन कंट्रीज, पॉलिसी ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज टुवर्ड्स टर्की। कौन? यूएस का स्टेक है क्योंकि पास में रशिया है। यूएस हैज टू कंट्रोल द ओशंस। कहां पहुंच गए हम लोग? टुवर्ड्स टर्की। अब लिखो राइट, दे वांटेड टू वीकेन टर्की comma to take the revenge and to reclaim the Holy Land. अंडरलाइन करो होली लैंड। लिखो राइट, एट दैट टाइम the holy land of all the three Abrahamic religions that is Jerusalem has been under Ottoman Empire. अंडरलाइन करो Ottoman Empire। लिखो, one of the largest empires at its height. Is spreading from Central Asia till Eastern Mediterranean, covering regions in Middle East, तो जो रीजन बॉर्डरिंग रीजन है उसको बोलते हैं लेवांट, LEVANT, लेवांट। लेवांट मीन्स द प्लेस फ्रॉम वेयर सन राइजेस, ईस्टर्न पार्ट लेवांट। इसको अरबिक में मशरिक भी बोलते हैं, मशरिक। तो ये इजिप्ट इस तक आ गया इधर, ठीक है। एज वेल एज द रीजन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, इसको अरबिक में मागरेब बोलते हैं, वेस्टर्न पार्ट। Maghreb, MAGHREB, Maghreb region, western part, नॉर्थ अफ्रीका, लीबिया, ट्यूनीशिया, इन सब के पॉलिटिक्स में अभी भी टर्की इन्वॉल्व है? अराउंड 1712 के आसपास, वो भी बता देंगे। पहले इसका स्टोरी पहले लिखो, कहाँ पहुंच गए हम लोग? मतलब यहां तक स्प्रेड था, फिर लिखो राइट, इट वॉज ऑल्सो स्प्रेडेड इन
Southern Europe. लिखो right. It is said that the spread was from Danube to Nile. Danube river to Nile. D-A-N-U-B, Danube to Nile. It means Turks were controlling one of the most important trade route. You wanted to know when it was peak. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे पीक था, नोट करके लिख सकते हो. The peak years of Ottoman Empire were between 1520 to 1566, and it started becoming weak after that. अब लिखो right. If you want to write the name of the king, it was under Suleiman the Magnificent. Suleiman the Magnificent, when Ottomans came to acquire vast regions of Southern and Eastern Europe. अब लिखो, एक ऐसे लिखो, what was the politics of Western nations लिखो right, to keep both the regional rivals weak. Regional rivals weak. तो regional rivals में लिखो Russian Empire, second Ottoman Empire, अब लिखो why these two were targets. Right, because of their location. Touching Central Asian region, and one who rules Central Asia will rule the world. अब Central Asia अब तक किनका रीच था. अब लिखो the policy of Britain. Pardon? What does decline in quality of leadership actually means? अरे भाई, लीडर अगर समझ नहीं पा रहा किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं. तुमने थ्योरी ऑफ पावर पढ़ा है, जैसे पैरेटो का, पावर में आने के बाद डिक्लाइन होता है ना. तो अगर लीडर के डिसीजंस गलत थे और रशिया से लड़ना ही नहीं था. What? It is destined to be disintegrated, but there are some decisions made by the leader that leads to this. तो डिक्लाइन तो हर एम्पायर का हुआ, ब्रिटिश का भी सनसेट हुआ. आज का जो ब्रिटिश किंग है उनका तुम्हें लगता है इतना वो लोग को चला लेंगे? कैलस मतलब यू बिकम कॉम्प्लिसेंट. तो अगर लीडर्स
डिक्लाइन ऑफ टर्की में एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी, टर्की ज्वाइंड द रॉन्ग पार्टी, बट उसको प्रोवोक किया गया। इसीलिए तो पॉलिटिक्स में ट्रैप्स हैं, इफ प्रिंस इज नॉट क्लेवर लाइक फॉक्स तो चला जाएगा वो। फिलहाल अभी हम आगे जा रहे हैं, कहां पहुंच गए? पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन। जो ब्रिटिश की पॉलिसी है वही अमेरिकन ने हमेशा ली, तो पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन, फॉरेन पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन को क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पावर। देखो राइट, पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है? एरो करके लिखो। नॉट लेटिंग any state to become too powerful to threaten others. देखो, one of the instrument of balance of power is divide and rule. Divide and rule. And it is very easy to divide those countries who may be sharing the borders, be it a maritime or a territorial. तो अब जो one, how it started becoming weak, तो उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है क्रीमियन वॉर। ठीक है, तो ऐसे लिखो, क्रीमियन वॉर, वॉर इन क्रीमिया, टाइम पीरियड 1853 to 1856। 1853 to 1856। ठीक है, अब लिखो, रशिया लॉस्ट बैटली, comma, the other party was Turkey, supported by Britain and France. Right? Turkey's position is always important to contain Russia. Hence, the Western countries will only want weakening of Turkey, but not punishing Turkey to the extent that it goes out of their influence. Prince knows the management of power. कितना पीटना है किसको? ठीक है, सेम थिंग जर्मनी के साथ है। जर्मनी विल बी रिक्वायर्ड टू कंटेन रशिया, तो जर्मनी को वीक तो करेंगे लेकिन अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रखेंगे। ठीक है, किसकी? यूएस तो रशियन रेवोल्यूशन से तो इन्वॉल्व ही है इन सब चीजों में। क्या चाहिए तुम्हें? रशिया का इन्फ्लुएंस बताया पॉलिसी। यूएस डायरेक्टली नहीं होता था ना, ब्रिटेन के थ्रू करता था, लेकिन है तो दोनों एक ही। चलो अब लिखो राइट, लिखो राइट, हेंस आफ्टर क्रीमियन वॉर,
after Crimean War, Turkey was included in the concert of Europe. मतलब यूरोपियंस अपने साथ रखा उन्होंने, तब से टर्की को लगने लगा ये यूरोपियन, ठीक है, और इतना प्यार से खिलाते पिलाते होंगे, ठीक है। तो अब ये सब, अब यहाँ पे लिखिए ट्रीटी ऑफ पेरिस 1856। ट्रीटी ऑफ पेरिस लिखो, लिखो कॉन्क्लूडेड वॉर इन क्रीमिया। तो इसमें दोनों का नुकसान हुआ था फिलहाल, ठीक है। तो अब, और दोनों को थोड़ा थोड़ा खुश भी किया गया था, ठीक है, जैसे कभी भी किसी के अगेंस्ट किसी की भी जरूरत पड़ सकती, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ब्लैक सी, इसमें क्या क्या हुआ था? ब्लैक सी टू बी अ न्यूट्रल टेरिटरी, means no military bases. Next लिखो, Black Sea will be closed for all warships तो रशिया एक्सेस नहीं कर पाएगा और मेडिटरेनियन में नहीं आ पाएगा। Will be closed for all warships, comma, no fortifications and no arms on the shore. Second point, treaty diminished Russia's status and diluted Turkey's rights. अब लिखो राइट, however, as Russia accepted the conditions, Russia was returned prominent towns captured during the war in Crimean region including Sevastopol, यहां पे नोट करके लिखो, रशियाज पोर्ट, naval port is located at Sevastopol in Crimea. It stations Russia's Black Sea Fleet. अब यहां पर ऐसे नोट करके लिखो, ब्लैक सी फ्लीट, नोट करके लिखो
कि दो रशिया एक्सेप्टेड डीमिलिटराइजेशन, दो रशिया एक्सेप्टेड डीमिलिटराइजेशन इन Treaty of Peace, Treaty of Paris, but Russian Turkish wars kept on happening. As a result, Russia remilitarized. Sevastopol. अब सब हेडिंग लिखो, ऐसे लिखो, टर्की ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब लिखो, राइट, टर्की मेड द स्ट्रेटेजिक ब्लंडर by joining the side of Austro-Hungarian Empire on the pretext of thinking, comma, that will help Turkey to retain the control in Balkan regions. Next लिखो, राइट, in the First World War, Western powers defeated Ottoman Empire right. Turkey suffered huge losses. Signed armistice, ARMSTIC, armistice with Britain in 1918. नेक्स्ट लिखो, ऐसे लिखो 1922, सॉरी 1920 ट्रीटी ऑफ सेवरस, SEVRES, ट्रीटी ऑफ सेवरस. लिखो सेवरस 1920 में, SEVRES, ट्रीटी ऑफ सेवरस. क्या कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली ट्रीटी है. अब इसमें लिखो टर्कीज टेरिटरीज वेयर पार्टीशन्ड and were to be divided among European states like Russia,
ये बाल्कन वाले रीजन में सब उधर, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन एंड ग्रीस। अंडरलाइन करो ग्रीस और यहां पे नोट करके लिखो। देखो, सिंस देन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन ग्रीस एंड टर्की over control of Cyprus. देखो, Cyprus is an island. देखो, Cyprus is an island in Mediterranean. With mixed population. मिक्स में ग्रीक्स एंड टर्क्स, कुछ लोग टर्क्स हैं, कुछ ग्रीक्स हैं। तो ग्रीक साइप्रॉट्स एंड टर्क साइप्रॉट्स, ठीक है। फिर लिखो, इनिशियली इट वाज, या इनिशियली इट केम अंडर कंट्रोल ऑफ द ग्रीक्स। तो ग्रीक, इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ग्रीक्स का कंट्रोल हो गया, ठीक है। अब लिखो, राइट, लेटर ऑन टर्की एक आइलैंड है, उसमें ग्रीक पॉपुलेशन भी है और टर्किश पॉपुलेशन भी है, ठीक है। पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले का मतलब बहुत पहले की नहीं, पहले क्रिश्चियंस थे, फिर ओटोमान आ गए, तब ये दोनों पॉपुलेशन हो गई। अब दोनों पॉपुलेशन के बाद फिर टर्की ने अटैक किया और एक उसका जो हाफ पार्ट है वो टर्किश कंट्रोल्ड है, हाफ पार्ट इंडिपेंडेंट है लेकिन वो ग्रीक से लिंक्ड है, ठीक है। प्लंडर ऑफ टर्की इन वर्ल्ड वॉर वन, कोई रीजन नहीं होता है, बताया तो। बाल्कन्स में वॉर चल रही है, तो बाल्कन्स वालों ने किसको मारा? ऑस्ट्रिया वालों को। तो बाल्कन्स में जो क्रिश्चियंस हैं वो किसके खिलाफ काम कर रहे हैं? ओटोमान एम्पायर को फ्री करना चाहते हैं, से फ्री होना चाहते हैं। तो टर्की किसको ज्वाइन करेगा? टर्की अपोजिट पार्टी को तो ज्वाइन करेगा नहीं, वो तो कहेंगे आज ही फ्री कर दो। तो टर्की के पास ऑप्शन क्या बचता है? ऑस्ट्रिया, हंगरी। ऑप्शन होना क्या चाहिए था? घुसना नहीं था वॉर में। घुस तो वो ऑस्ट्रिया हंगरी के ही साइड से सकते थे, लेकिन वॉर में घुसना ही नहीं था। किया ना, तभी तो कुछ फ्रांस में गई, कुछ ब्रिटेन में गई। अभी पहले ये खत्म करो ना। और मैम इस कंटेक्स्ट में तो हम सिर्फ बाल्कन की बात कर रहे हैं ना, अभी जो आप लिखवा रहे हो उसमें। अरे तो करने दोगे तब तो करेंगे बात। बाल्कन से एकदम कूद के कैसे आए? बाल्कन से कूदे कहां पहुंचे? साइप्रस में। साइप्रस से कूद के उधर पहुंचेंगे? कूदने तो दो पहले। कहां पहुंच गए हम लोग? मैम पहले ग्रीक्स के अंदर आ गया, फिर को लेटर मैम, ऑन। मैम ऑस्ट्रियन हंगरी का फिर से बोलेंगे, व्हाई टर्की ज्वाइन? बिकॉज मुस्लिम और क्रिश्चियंस है ना। सबसे पहले बाल्कन सपने में देखो, ठीक है, जहां युगोस्लाविया है। अब युगोस्लाविया वाले रीजन कौन सा रीजन है? जहां पहले बाइजेंटाइन थे, फिर ओटोमान आ गए, तो मुस्लिम्स और क्रिश्चियन साथ साथ आ गए, ठीक है।
तो कौन चाह रहा था कि टर्की से उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए? कौन चाहेगा? क्रिश्चियंस। तो क्रिश्चियन कंट्रीज कौन से हैं? ब्रिटेन ब्रिटेन है, ठीक है। तो उन्होंने क्या स्टार्ट करवा दिया? और ब्रिटेन वालों को दूसरा क्या था? ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, जर्मन वाले। तो इन सबको ऐसे पॉलिटिक्स कर दी गई। तो सारा जेवो वाले को बोल दिया जा गया कि भाई जाकर के प्रिंस को मार दो। तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया का जो वॉर स्टार्ट हो गई ना, वैसे उधर ऑस्ट्रिया ने वॉर स्टार्ट करी। तो कौन किसके साथ जाएगा? इशू ये है कि टर्की को किसी के साथ जाना ही नहीं था, और फिर जो जीतता हारता देख के तब जाते। वॉर में घुसना नहीं था। वो क्यों घुसे वॉर में? क्योंकि उनको लगा कि वो वहां से डिस्प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। मैम टर्की ने ज्वाइन किया फियर ऑफ मिसिंग आउट से, कौन सा फियर ऑफ मिसिंग आउट? कि उस रीजन में वॉर हो रहा है इसीलिए। प्रिंस ने क्यों ज्वाइन किया? किसने किसको ज्वाइन कर लिया पहले वो बताओ। मैम टर्की ज्वाइंड ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। यहाँ पे है टर्की का पेनिनसुला, ठीक है। यहां से जुड़ा हुआ है यूरोप, ठीक है। यूरोप का ये सदर्न पार्ट है, और ये मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ पर इजराइल है, यहाँ पर बुल्गारिया यूगोस्लाविया ये सब है। यहाँ पे सर्बियन रह रहे हैं, और इधर ऑस्ट्रिया हंगरी का एम्पायर है। तो ये ओटोमान एम्पायर है, ये ऑस्ट्रिया हंगरी। इसने इसके किंग को मार दिया। इनका झगड़ा हो गया, और इनका तो पहले ही झगड़ा था। ये क्रिश्चियंस हैं, ये मुस्लिम्स हैं। तो कॉमन एनिमी कौन है? तो कॉमन एनिमी के अगेंस्ट ही तो ज्वाइन करोगे। और इनको भड़का कौन रहा है? इनको सब वेपन वेपन दे कौन रहा है? वेस्ट ही तो दे रहा है। उनका अपना गेम है। अब चलो, अब कहाँ पहुंच गए? थैंक यू मैम। हाँ, लेटर ऑन टर्की इन्वेडेड साइप्रस and established its control over part of Cyprus. ठीक है। सो टुडे कैसा है? साइप्रस डिवाइडेड है, और साइप्रस, इसीलिए हमारा साइप्रस से रिलेशनशिप है, क्योंकि हम टर्की के अगेंस्ट हैं। वी हैव गुड रिलेशंस विद साइप्रस। तो जब जैसे टर्किश प्रेसिडेंट आए यहाँ और उल्टी सीधी बातें की कश्मीर को लेके, तो तभी साइप्रस वाले को शायद पहले या उसके बाद बुलाया गया, ठीक है। तो साइप्रस को इंडिया ने बुलाया। फिर इंडिया ने कहा कि साइप्रस वालों का लैंड आपने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। फिर इंडिया ने, मतलब नहीं, पहले साइप्रस वालों को बुला लिया था, क्योंकि इंडिया को पता था कि ये आएंगे तो ये वो ह्यूमन राइट्स और कश्मीर और इंडिपेंडेंस की बातें करेंगे। तो पहले ही साइप्रस को बुला के रखा गया था। और इसलिए फिर जब इन्होंने सब बातें करना चालू किया, तो मोदी जी ने एर्दोगान को बोला, जिनके घर शीशे के होते वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। यानी आप हमारे बारे में बोल रहे तो हमारे पास भी बहुत कुछ है बोलने को, ठीक है। तो इसको कहा जाता है मोदी जीज हार्ड बॉल डिप्लोमेसी, ठीक है। मोदी जी ने तोड़ दिया, मतलब गेंद फेंक दी, ठीक है।
तो ऐसे डिप्लोमेसी कर दी। अब चलो, अब ये तो बाद में कभी उठाएंगे ये कहानी। अब वापस आते हैं, नेक्स्ट लिखो। अब लिखो ओटोमान एम्पायर्स टेरिटरीज। ओटोमान एम्पायर्स टेरिटरीज इन West Asia were divided between Britain and France. ठीक है, अब लिखो पैलेस्टीन became British mandate. तो ब्रिटिश थे वहां पे, ठीक है। अब एक और ट्रीटी लिखो, ट्रीटी ऑफ लुजाने। लुजेन जो भी है, लुजेन इज वेयर, लुजेन कहां पे, कहां पे, इनको पता है कहां पे? देखो ट्रीटी ऑफ लुजेन, ईयर लिखो 1923। इसमें लिखो इन ट्रीटी ऑफ सेवरस Britishers humiliated the king of Turkey, sorry, Sultan of Turkey. सेंड ऑफ पार्टी की उन्होंने कि अब उठो इस्तांबुल से जाओ, ठीक है। ह्यूमिलिएटेड द सुल्तान ऑफ टर्की, देखो राइट, बाय सेंडिंग हिम ऑफ from Istanbul. In British warship. अब लिखो this hurt the pride of Turkish nationalists. देखो मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल KEMAL, कमाल पाशा started वॉर अगेन। वॉर्स मतलब जो भी एलाइज के खिलाफ थोड़ा लड़ाई झगड़ा ये सब स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब लिखो राइट, टर्की वॉर अगेन, ब्रैकेट में लिख दो टर्किश नेशनलिज्म। टर्किश नेशनलिज्म। अब लिखो टर्की इज important to contain Russia, therefore in order to appease Mustafa Kemal, KEMAL, Mustafa Kemal, another treaty was signed by which
some of the territories were given back. देखो, the Treaty of Lausanne is responsible for recognition of Turkey as a independent state. अब लिखो, it is comparatively more favorable but at the same time some restrictions were also introduced. Like Turkey cannot drill oil. ठीक है, तो इट्स अ ऑयल रिच सराउंडेड बट इट कैन नॉट डू सो. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो. हाँ, It was the policy towards the territory which were given afterwards or the throughout the जो नॉन टर्किश टेरिटरीज थी वो अपने अंडर में रख ली, जैसे अरब वाली टेरिटरीज, और बाकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था तो जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल है वो दे दिया. तो मतलब कुछ कुछ उनके वापस कर दिए क्योंकि उनको खुश करके भी रखना है ना. और अभी क्या है कि टर्की वो रीजन गार्ड करेगा, वरना डायरेक्टली आपको कंट्रोल करना पड़ेगा. अब नेक्स्ट लिखो, टर्की इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अब इसमें लिखो, राइट, देखो, इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर टर्की ज्वाइंट from the side of allies. ठीक है, next, it consolidated the relations between Turkey and the Western countries. लिखो, टर्की joined NATO in 1952, became the second largest troop contributor to NATO. Right, Turkey also became the member of Middle East Defense Organization. जो अमेरिकन मिलिट्री पैक्ट्स थे उसके मेंबर कंट्रीज लिखो, मेंबर कंट्रीज. मीडो या बगदाद पैक्ट शायद 54-55 का है, तो मेंबर कंट्रीज में लिखो यूएस, यूके, फ्रांस, टर्की,
ईरान, पाकिस्तान। ठीक है, तो अब वो टर्की की स्टोरी बाद में करेंगे। अब हम आ जाते हैं इधर। अब इसमें एक सब हेडिंग लिखो, ओरिजिन ऑफ इजराइल। ओरिजिन ऑफ इजराइल। अब लिखो, राइट, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द वेस्टर्न कंट्रीज wanted to bring this strategic region in Eastern Mediterranean under their control. अब लिखो, Jewish cause gave them an excuse. Jewish cause gave them an excuse. Right? It is believed that Jews were expelled from the region मतलब ओरिजिनली वहां से थे, मिडिल ईस्ट, एक्सपेल्ड फ्रॉम द रीजन, कॉमा, दे बिकेम refugees in European countries. एक एक कंसेप्ट लिखो, एंटी सेमाइटिज्म। एंटी सेमाइटिज्म, SEMITISM, एंटी सेमाइटिज्म। देखो, it is a term coined by Wilhelm Marr, MARR, German scholar Wilhelm Marr, to point out a strong anti-Jewish sentiments prevailing in different countries of Europe. Right? Countries like Russia, used to have anti-Jewish laws. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, राइट, एट द सेम टाइम Western countries like Britain started creating the dream of homeland for Jews. आप लिखो, राइट, ऐसे लिखो, सब हेडिंग, जायनिस्ट मूवमेंट।
Jewish movement. Right? Jews also started organizing themselves and started talking about the Jewish state. Right? It is believed that Theodore Herzl gave the concept of Jewish state. तो अब Jewish का क्लेम बन जाता तो इनको वहां से हटाना जरूरी था, इसीलिए ग्लोबल सेंटिमेंट बनाना जरूरी था ज्यूस के लिए, इसलिए ज्यूस को पीटना जरूरी था। ठीक है, तो ज्यूस मतलब एक स्टोरी बिल्डिंग की गई दैट ज्यूस आर परसिक्यूटेड एंड देयर शुड बी a separate state for Jews. So this entire conspiracy was being cooked up. ठीक है, तो अब लिखो gradually the sentiments to legitimize a separate state for Jews started emerging, but Jews had to pay heavy price. ठीक है, इसमें लिखो रोल ऑफ हिटलर। Said that it was conspiracy theory that Jews are persecuted ज्यूस का परसिक्यूशन जरूरी था ना, तभी तो दुनिया भर में लोग कहेंगे कि अच्छा इनके लिए अलग स्टेट बना दो। No, ma'am, but how come they were persecuted all around the places, even in the ऑल अराउंड परसिक्यूशन इसीलिए तो हो रहा था कि दुनिया भर से ज्यूस जाके वहां रहें, इंटरमिक्सिंग ना हो ज्यूस की। मैम वेस्ट एशिया में भी हो रहा था, जो फ्रांस वेस्ट एशिया में ज्यूस का परसिक्यूशन था नहीं एक्चुअली। वेस्ट एशिया में स्मॉल नंबर ऑफ ज्यूज वेयर लिविंग एंड इनिशियली देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ज्यूज एंड पैलेस्टीनियंस, दे वेयर लिविंग पीसफुली। Then suddenly Britain announced Balfour Declaration and they said they will create a separate state. And after that, those riots etc. started. Okay? अब इनको एक स्टेट बनाना था ना वहां पे जाकर के, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन दिखाना था यूएन में जाकर के कि भाई इनके लिए बनाया जाए। तो अब ऐसे लिखो होलोकास्ट, हाँ रोल ऑफ हिटलर लिखो, देखो हिटलर ऑफर्ड द फाइनल सॉल्यूशन। टू Jewish problem.
फाइनल सोल्यूशन अंडरलाइन करो, नोन एज होलोकास्ट। HOLOCAUST, होलोकास्ट। तो ब्राजील के वाले कंपेयर कर रहे हैं जूइश एक्शन इन गाजा विद होलोकास्ट। जो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते समय, ठीक है। तो होलोकास्ट, होलोकास्ट में लिखो, होलोकास्ट क्या था? सिस्टमेटिक स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग of around 6 million Jews. तो हिटलर के एक्शन जो हैं वो एक रीजन देते हैं ग्लोबल सेंटिमेंट्स की, भाई बना दिया जाए, ठीक है। अब लिखो 1917 टाइमलाइन अब स्टार्ट होती। हाँ, प्रॉस्पेरस नहीं है भाई, एक पोस्ट, एक जगह चाहिए मिडिल ईस्ट में, ईस्ट मेडिटेरेनियन में। तो किसी के घर में कैसे घुसोगे? तो घर में घुसने के लिए स्टोरी बनानी पड़ती है। वाइड स्प्रेड सेंटिमेंट हमेशा रेफ्यूजीज के अगेंस्ट ही होता है। कोई रेफ्यूजीज को वेलकम नहीं करता है क्योंकि वो बर्डन माने जाते हैं। वो तो कॉमन मैन का लेकिन जो पॉलिटिकल क्लास है वो रेफ्यूजीज को यूज करेगा अपने फायदे के लिए, ठीक है। तो अब लिखो, अब टाइमलाइन प्रॉपरली लिखो। बालफोर डिक्लेरेशन, बालफोड़ डिक्लेरेशन, सिर फोड़ डिक्लेरेशन, उसी से सिर फुट गया तब से। BAL, यस, कहां से निकाला गया था पहले? अब वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री है, कोई कहता है नहीं निकाला गया, कोई कहता है निकाला गया, लेकिन एक्सपेंशनिज्म हुआ रिलीजन्स का। तो सबसे पहले ज्यूज वहां पे थे, ज्यूज और क्रिश्चियंस का झगड़ा स्टार्ट हुआ बिकॉज Jewish king ordered for crucifixion of Christ. Then फिर Islam came, expansion of Islam. So ultimately nobody accept any theory, but we can go with that they were persecuted. अब है सिर तोड़ बाल फोड़ डिक्लेरेशन। ईयर तो बताने ही नहीं देते तुम लोग, पहले बालफोर लिखा, ईयर लिखो जल्दी। 1917, बालफोर डिक्लेरेशन 1917। इसमें लिखो ब्रिटिश गवर्नमेंट सडनली अनाउंस्ड दैट दे सपोर्ट Jewish demand for separate homeland. Next लिखो 1918, 1918 region came under control of British. Control of British from Ottoman Empire. Next लिखो 1922, League of Nations also approved creation of
homeland for Jews. Next paragraph लिखो. Up till now, Jews were small in number and living peacefully with Arab neighbors. अब लिखो, after Balfour Declaration and the region coming under British the scale of immigration increased. ठीक है, अब लिखो, gradually the riots started between the Arabs and Jews at a small scale. जैसे इंडिया में इन्होंने कहा पाकिस्तान को हम सपोर्ट करेंगे, तो फिर राइट्स वाइट्स स्टार्ट हो गए, सेम पॉलिटिक्स कर रहे हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो 1947. UN General Assembly Resolution 181 known as UN Partition Plan. ठीक है, अब लिखो, द मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन एट दैट टाइम अंडर ब्रिटिश. जैसे इंडिया का हो गया पार्टीशन, इसलिए अपोज किया गया था. दैट टाइम अंडर ब्रिटिश टू बी डिवाइडेड between ए लिखो, Jewish state, second Arab state or Palestine, next city of Jerusalem to be under international control. ठीक है, अभी यहां पर इंडिया का साथ ही साथ बता देते हैं, ऐसे नोट करके लिखो. मुस्लिम वर्ल्ड में है ना, वही तो वॉर तो होगी ना. अरे अभी छोटे मोटे राइट चालू हो गए ना, इजराइल बनने के बाद चालू होगा वॉर. अब यहां पर नोट करके लिखो, लिखो इंडिया अपोज्ड द क्रिएशन ऑफ इजराइल. इसमें लिखो व्यूज ऑफ गांधी. लिखो पैलेस्टीन बिलोंग्स टू अरब्स. जस्ट लाइक फ्रांस बिलोंग टू फ्रेंच. And
England belong to English speaking. नेक्स्ट लिखो पंडित नेहरू. लिखो ऑल्सो स्ट्रांगली अपोज्ड. अब लिखो वाई इंडिया अपोज्ड. क्यों अपोज किया इंडिया ने? वाई इंडिया अपोज्ड. पॉइंट नंबर 1, नहीं पॉइंट नहीं लिखो. इट इज अज्यूम्ड दैट views of Nehru and Gandhi were driven by two factors. ऐसा जीएस वाले बताएंगे. ठीक है, पहला फैक्टर लिखो जीएस फैक्टर, जीएस थियरी. ठीक है, देखो जीएस थियरी लिखो. इन प्रिंसिपल इंडिया वॉज अगेंस्ट क्रिएशन ऑफ state on the ground of religion. ब्रैकेट में लिख दो पाकिस्तान फैक्टर. अब जीएस में किसी ने और ज्यादा पढ़ा होगा, उसका फैक्टर लो GS2 थ्योरी. ठीक है, देखो लिखो डोमेस्टिक डिटर्मिनेंट. डोमेस्टिक डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया द सेंटिमेंट्स ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज. ठीक है, तो अब उसमें जनसंघ की थ्योरी है. थ्योरी पे थ्योरी, और समझ किसी कुछ नहीं आ रहा. ठीक है, एरो करके लिखो. अभी ये लिख लो फिर बताते हैं. एरो करके लिखो. लिखो इट वॉज सीन एज मुस्लिम अपीजमेंट बाई anti-Congress factions. Factions of Indian politics. अब किसको कौन सा डाउट था? Sounds like narrow view of Nehru. क्यों नैरो लग रहा है तुमको? गांधी ने तो हमेशा कहा कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए. गांधी जी गलत नहीं थे. चलो मैम, अब ये तुम लोग का मैम, जीएस सुपर जीएस हो गया. अब पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से लिखो. लिखो मैम, व्हाट वाज द रियल रीजन. तुम्हारा कोई दुख बोलिए. मैम अभी हमने ये पढ़ा ना कि हिटलर ऑफर्ड द फाइनल सॉल्यूशन. मैम इट सीम्स दैट इट इज सपोर्टिंग ब्रिटेन, बट हमने ये पढ़ा है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल से हिटलर जो था वो ऑफेंड हुए थे. दैट्स व्हाई वो जीएस में पढ़ा जाता है. मैम बट हमने तो दोनों पढ़ा है, उसको अनलर्न कैसे करें फिर? अनलर्न जीएस में जनरल स्टडी है, सामान्य समझ है. तो सामान्य व्यक्ति जो जानता है वो आपको जानना होता है. ठीक है, और ये क्या है? ऑप्शनल विषय, वैकल्पिक विषय जिसको आपने चुना है पढ़ने के लिए. तो सामान्य स्तर पे तो नहीं पढ़ सकते, तो मैटर ऑफ चॉइस
चॉइस से आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डीप पढ़ते हैं। तो जीएस में उसी भावना से लिखिए। जीएस का पेपर के जो टीचर होंगे वो बीए टाइप लोकल वाले होंगे, और ऑप्शनल में होंगे जो यूनिवर्सिटी वाले होंगे। अच्छा चलो, अब ये सब अब लिखना है कि व्हाट वाज द रियल रीजन। ठीक है, अब लिखो गांधी वॉज नॉट एन आइडियलिस्ट। ठीक है, गांधी वॉज वेरी प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन। भावना में नहीं बहते थे गांधी। ठीक है, प्रैक्टिकल इशू क्या था, वाई गांधी अपोज्ड या वाई इंडिया अपोज्ड। तो पहली चीज ये है, वेस्ट एशिया and India's security is interlinked, and Gandhi knew that once Israel will be created, the entire region will be politically unstable forever, and the instability in West Asia is going to impact India's interest. So it was a very practical and strategic reason. It was nothing to do with principled approach. कोई principle की बात नहीं थी। आ गया समझ में? तो गांधी का रियल रीजन क्या था, लिखो राइट। गांधी न्यू दैट सिक्योरिटी ऑफ वेस्ट एशिया and India is interlinked. Likho, he also knew that once Israel will be created, it will lead to permanent instability in the region. Comma, that is not good for India. अब दूसरी चीज, तुम लोगों ने जीएस में हिस्ट्री पढ़ी होगी, हम लोग पॉलिटिक्स समझ रहे हैं ना, इसलिए जीएस में हिस्ट्री के बेसिस पे बताया जाता है। तो यहाँ पे असली रीजन ये था, कोई प्रिंसिपल बेस्ड नहीं होता फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, अब जब ये मतलब, अब देखो व्हाट वाज द आफ्टर इफेक्ट्स। देखो व्हाट वाज द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ इजराइल। आफ्टर इफेक्ट था अर्थक्वेक, धरती हिल गई, भूचाल आ गया है। क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ इजराइल। आफ्टर इफेक्ट है बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर in Middle East. इसीलिए तो नॉन अलाइनमेंट था, बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। अंडरलाइन करो कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर इज व्हाट, राइवलरी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। अंडरलाइन करो यूएसएसआर, लिखो यूएसएसआर
never wanted USA's military outpost in East Mediterranean. लिखो, USSR looked at it as a containment of Russia. एरो करके लिखो, लिखो Russia's entry into the outside world मतलब अदर देन यूरोप को अगर देखें, टू आउटसाइड वर्ल्ड इज थ्रू, फर्स्ट लिखो ब्लैक सी, ठीक है। अब यहां पर टर्की है, ब्रैकेट में लिख दो, टर्की इज कंटेनिंग रशिया हियर। नेक्स्ट लिखो आउटसाइड ब्लैक सी इज मेडिटेरेनियन सी। फिर लिखो रशिया इज कंटेन्ड इन बोथ नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, नॉर्थ अंडरलाइन करो, यूरोपियन कंट्रीज जैसे बाद में नेटो मेंबर्स बन जाएंगे, ग्रीस, टर्की, और साउथ में इजराइल। ठीक है, अब लिखो हेंस Russia provoked Arab states of Levant region against Israel. ठीक है, अब एक टर्म लिखो नकबा, NAQBA, नकबा। लिखो अरेबिक वर्ड फॉर कैटेस्ट्रॉफी, कयामत। इजराइल का क्रिएशन मतलब कयामत की रात आ गई, यू अंडरस्टैंड, अरब वर्ड। अब लिखो राइट। अब ये सब सोवियत है ना, ये सब प्रोपेगेंडा क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब लिखो राइट, द डे इजराइल्स क्रिएशन वॉज अनाउंस्ड इट लेड टू द mass movement of Palestinians out of the region, comma, being fearful of the war. अब लिखो they became refugees in the neighboring regions like Lebanon, Syria,
जॉर्डन, इजिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, टाइमलाइन में लिखो 1948 फर्स्ट अरब इजराइल वॉर। फर्स्ट अरब इजराइल वॉर लिखो 5 अरब स्टेट्स led by Egypt invaded Israel, या अटैक्ट कर सकते हो, अटैक्ड इजराइल। तो उस समय इजिप्ट लीडर था, ठीक है। तो और स्टेट्स कौन कौन से थे इसमें लिखो, इजिप्ट के अलावा जॉर्डन, इन सबको यूएस ने प्रो यूएस बना लिया था। इजिप्ट के बाद था जॉर्डन, जॉर्डन के बाद सीरिया, लेबनान एंड इराक। ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, ब्रिटिशर्स हैड लेफ्ट बाय दैट टाइम। Britishers had left by that time and created IDF, Israel Defense Forces. ठीक है, right. Arabs were defeated in the war. And Israel expanded the area, comma, more than 30%, that was the original area. अब लिखो, राइट। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट डेवलपमेंट लिखो 1950 Israel became member of UN. ठीक है। अब लिखो, लेटर ऑन इंडिया ऑल्सो recognized Israel. ठीक है, लिखो, it was recognition without diplomatic relations. अब लिखो, पंडित नेहरू held that Israel is a fact and we have to accept it. अब एक क्वेश्चन लिखो, लास्ट खत्म। क्वेश्चन ये लिखो, वेदर there was a difference between the Congress and the rightist parties like Hindu Mahasabha on the question of Israel. ठीक है, यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके।
थोड़ा मैप देखो।